नमस्कार मैडम. नमस्कार. Okay, so let's start with the class. I was telling you that this we were discussing about ancient Indian state formation and what was the circumstances where Indian subcontinent, Indian political history, where we had moved from the pre-state condition to the state condition, and the phases we have discussed from the Harappan to the Vedic, and then 16 Mahajanapada time, then Mauryan imperial Maurya, then we have discussed about this Kushanas, Indo-Parthians, and due to the non-availability of time. I had to stop the meeting during the time of. So we'll today discuss about the Gupta as well as the post-Gupta politics, and it was a part of your first unit as well as the second unit. Before starting the class, I would like to take one or two questions if you have any. If you have read yesterday whatever we have discussed, please feel to ask anything. Uh, I will try to give you the answer. And if not, then please mute yourself. I will start the presentation. Okay, please stay mute. Anything? Any questions from anyone? Okay. So please mute yourself. Yes. Yes, Rinky. मैम रोल नंबर टा कोड लिखा हुआ जानी मैम ତମର chat box ଅଛି side ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ box ଆସୁଥିବ chat box. You are using from Android or window? मैम एंड्रॉइड फोन ହଁ ସେଇଠି ସେଇ box ଥିବ ମଝିରେ ଦେଖ ସେଇଠି chat box ଥାଏ ମଝିରେ side ରେ I don't know I'm using from window. ସେଇଠି ଗୋଟେ chat box ଥିବ information ଆସୁଥିବ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ message କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ. ओके मैम गुड So आफ्टरनून let's yes Dipti. गुड आफ्टरनून मैम Yes, please ask Azma. Please ask anything, any questions if you. Yes, I'm listening. दिस इज माय फर्स्ट क्लास आई कुड नॉट अटेंड दिस क्लास It's okay. You can go through this first unit and read it. We have all other. We have rest of the five classes. You can attend them all. Okay, so I'm starting with this. The early medieval, the pre-early medieval phases, the Gupta phase, and then we'll discuss the post-Gupta polity also. That is the second unit of your. Okay. Like I was telling you, जो भी हिस्ट्री पढ़िबार अछि जिते भी हिस्ट्री पढ़िबार अछि every phases has its own sources. Okay, literary sources, inscriptional sources, archaeological sources. ये जो phase टा after the Kushanas, India and the Mauryan, when the Mauryan Empire disintegrated, uh, this Indian subcontinent territory were divided among the many dynasties like Sunga, like Satavahanas later on, then Guptas emerged in the northern India. So it has a long political history till the 6th century when Harsa, the Kannauj, became the center of the state in 606 AD when the Kannauj dynasty emerged. So I told you that if you are not aware of political history of India,
You can read from any small book, fundamental book like Aris Sharma Ancient Past, or you can read from D.N. book, which is a very small or conceptual book for ancient India. Then only you can understand the political history. Then only can you can accommodate this the concept of state formation and the nature of state. So I will not go into the political history, like because of the time is so limited. Though I have to take these classes on uh, early medieval phase. The two things you have to understand here, that one is the what was the polity means how this whatever dynasty was there, Gupta or either the Chalukyas or Pallavas. We are talking about the history from 3rd century AD to the till almost 12th century AD, partly. So we'll divide what we'll do. We'll divide it into three segment. We can divide into three segment, or four if it is better. Then the first segment is the Guptas. They ruled for 200 or whatever the time frame is. I'm not good in the dates. So this Gupta dynasty has ruled over the northern India. At the same time, we have the history of Pallavas, Chalukyas, Pandyas, and then the Kannauj dynasty. So very briefly, you should know that what was the idea of the state at that time, how they ruled this country. So, like I was telling you, the new type of information is the very much the source of our historical reconstruction. These are the land grants. You know what is land grant? The land grants are the donation given by the king to the Brahmins or the priest. Okay, and these land grants in the form of copper plate. Basically, most of the land grants are in the form of copper plate only, and these are very much in circulation. Or you can see, you can tell it was a curricula, scribal curricula among all the dynasties of early medieval or late medieval India. Okay, we are talking about pre Delhi Sultanate phase, pre medieval phase. Okay, so coins, now coins are also very important. Like we have Gupta coin, Gupta gold coin, and as you know, Satavahana also issued many type of coin in the like Coromandolo type coin. There are Potin coin. Exam रे भी ऐसे Satavahana ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ simple ବହୁତ there was a alloy coin was there issued by the Satavahana. Alloy ମାନେ ଏଥିରେ tin copper ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ କିଛିଟା ଆହୁରି ମିଶେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୋତିନ କଏନ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ. they have this huge coin. Gold coin ନଥିଲା Satavahanas ଇସ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି, but then there are so many coin issuers like silver, copper, and Potin coin were issued by the Satavahanas, and they have this huge trade relation with the Roman Empire. So we have histories of Kushanas, Satavahanas, their contemporary, and the later on the Guptas, who reissued the coins of Roman again and again after the till 3rd 4th century AD. 4th century तक से जो coin ଆସିଥିଲା Roman ଇଏରୁ last class ରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ Roman trade ଥିଲା ବା silk route trade ଥିଲା, ଯୋଉ trade ରେ coin ଗୁଡାକ gold coin ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଥିଲା as a bullion ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ, କିଣୁଥିଲେ, ମାନେ ଓଜନରେ କିଣୁଥିଲେ gold coin କୁ, Roman gold coin, and then they used to issue it in India. That's why Indo-Greek time ରେ ତମେ gold coin ଏତେ affluent ରେ ପାଇବ. ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ gold coin କୁ ସେମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି. ଦେନ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତା and ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ coin ରେ alloy ମିଶା ହଉଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ alloy ଗୁଡାକ ମିଶା ହଉଛି. Then you will say that till early medieval India ଏଗୁଡାକ ଆହୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି. And then why this voice is echoing? हेलो मैडम हेलो Yes. Yeah. हाँ मैडम एक्चुअली ये गोल्ड कॉइनटा କାହା ସମୟରେ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଥିଲା Why ଇଣ୍ଡୋଗ୍ରୀ my actually Dipti, please mute yourself. Everyone, yes. There are a lot of people are unmute now, right now. Please mute yourself. हेलो Yes, मैडम mute. आई हैव ए Yes, क्वेश्चन I heard you. I heard you. Please, my voice is echoing. First, let me tell everyone. Please mute yourself. If you don't have any question, please mute yourself first.
Just one by one, go one by one, or there is a chat box. I would like to take the question in the chat box also. Yes, Firoz, you can go on. You can ask the question. थैंक यू मैडम मैडम एक्चुअली गोल्ड कॉइन कहा समय था इंडो ग्रीक ना कुषण आउ ना गुप्त तो कहा समय इंट्रोड्यूस होता कौ डायनेस्टी ताकू बेसी यूज करते लार्ज अमाउंट लार्जेस्ट यूज गोल्ड कॉइन बाय व्हिच डायनेस्टी See, these reports are based on the excavations report. Okay, एबे जाए जते excavation रे मिली ची जदि जदि यार को टिके कंट्रोवर्सी था नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट रे फिर भी जदि फर्स्ट कॉइन कहबो इंडिया रे जो गुड़ाक कास्ट कास्ट सिस्टम रे जो गुड़ाक यूज कराला फर्स्ट एमिति तो कॉइन तमर 16 महाजन पद्धति आसिलानी पंचमार्क कॉइन जोटा तापरे मोरियंस माने भी पंचमार्क कॉइन बहुत अधिक परिमाण रे यूज करले तार इंपेरियल वेराइटीज भी थिला मगध एरिया रे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल सहित बट दीज आर ऑल पंचमार्क कॉइन जो गुड़ाक शीट को काटिकी 56 ग्रेन रो अमाउंट करिवे देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पंचमार्क कॉइन डीडी कोसाम्बी हैज वर्क ऑन दिस द सेकंड थिंग इज अबाउट द कास्ट कॉइन जो गुड़ाक मोल्डिंग मेथड पर जो आसुची कास्टिंग मेथड जोटा मॉडर्न कॉइन बोलिया तुम देखुछ दिस कॉइन आर इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स फर्स्ट टाइम और सेही माने ही गोल्ड कॉइन इश्यू करथिले फॉर द फर्स्ट टाइम जदि देखिबो बट दो जदि इंडियन सबकंटिनेंट को नौच ताहेले तमे सेटा को इंक्लूड करि परिबो बिकॉज़ इट वाज इश्यूड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जते बेले वीमा कार्डापाइसिस टाइम रे तो तमे जानिचो काजुलो कार्डापाइसिस आसिला बेलो को कश्मीर ता से माने ऑक्युपाई करि नौचंती देन कुशानास टेरिटोरी वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द तमरा पूरा ईरान और ये पूरा एरिया को नेकी सेंट्रल एशिया रीजन टू नेकी अलाहाबाद कोसाम्बी तक थिला तो यही रीजन मथुरा वाज हिज देयर कैपिटल एंड दे इश्यूड दिस कॉइन गोल्ड कॉइन इन देयर टाइम आल्सो जो थे बुद्ध भी अछंती उमा महेश्वर अछंती शिव अछंती जो इंडियनाइज्ड होछंती दे हैव द देयर इज अ बुक ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक बाय के थापरिया देयर इज अनदर बुक बाय पीएल गुप्ता इफ यू वांट टू रीड इंडियन न्यूमिस्मेटिक ओपिनियन और आल्सो उपिंदर सिंह रो बही भी देखि दे परिबा जदी कंफ्यूजन लागुची then came to guptas first introduce kari nahanti lekin question रे जदि आसीबो who were the indigenous ruler who issued the first gold coin in India then you can write Guptas because Gupta were the indigenous ruler India ruler सेमिति question टिके tricky आसे केते बेले कि के first issue करथिले को indigenous ruler these two questions are very different than each other India रे issue जदि कहबो तो इंडो ग्रीक टाइम रे already issue हे जायछि आ जदि indigenous ruler कहबे ताले गुप्ता रे रहबो Gupta reissued these coins, which was already in circulation in the Gujarat and northwestern region by the Kushanas or late Kushanas. जो माने late Kushanas रही जाते late phase तक there are Kanishka third, Kanishka fourth, तार अन्य branch अच्छी. Then these when Chandragupta II occupied this Kathiawad region, सेतेबेले से कोन करचंती एगुडा को रीइश्यू करूचंती जदि तमे देवी चंद्रगुप्तम पढिछ you will see how they have represented through their poets and author जो लेखुचंती देवी चंद्रगुप्तम को से बहुत ही तांको अराज लेखुचंती एनार्की थिला the Saka ruler was very much तार कैरेक्टर भलो नथिला like that because they are regarding them as a milacha the outsider okay so सेमानंकु इंडियन टैक्स रे बहुत ही खराब ये रे देखा जाय छै like देवी चंद्रगुप्त रे एंड चंद्रगुप्त को बहुत है because he was the court poet तो सेति पई टिके टेक्स्ट को यदि तमे ये देबो अदरवाइज गुप्त जतेले आछंती ताको री इश्यू करूछंती इंडिया रे काहे कि जदि भी गुप्त मने करे जो माने भी कहते गुप्त टाइम रे गोल्ड कॉइन आस्थिला लेट मी टेल यू इंडिया रे गोल्ड रो सोर्स जो भी किछटा लिमिटेड थिला इट वाज नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द गुप्त एंड से मानकर टाइम रे जदि चंद्रगुप्त मौर्य को टाइम रे बा चंद्रगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड को टाइम रे से गोल्ड कॉइन गुडा को री इश्यू होची री माने तार नेम गुडा को चेंज करा होची and that जदि मनेकर तम देश रे तम कंट्री रे गोल्ड टा आसुनी मिनरल रे आसुनी but you are borrowing from some other territories like Romans एई टाइम रे कोन हला थर्ड सेंचुरी परे परे रोमन एम्पायर डिक्लाइन करि गला तमरा सिल्क रूट डिक्लाइन करि गला बिकॉज़ जो बेजेंटाइन एम्पायर थिला बेजेंटाइन एम्पायर तमरा इमर्ज करूची बिकॉज़ दिस डिपेंड ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिया हिस्ट्री
कोटे बाहर नो इंडियन हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो यू हैव टू सी फ्रॉम दैट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू सो गोल्ड कॉइन आसुथिला इंडिया रे बाय द रोमन्स ओनली जो माने कि इजिप्ट रो रिसोर्स गुडा को एक्सप्लोइट करूथिले एक्सट्रैक्ट करूथिले इंडिया रो कोन जाउथला कॉटन जाउथला पेपर जाउथला जो स्पेसिस गुडा को जाउथला जहार सतवाहन पोर्ट गुड़ाक जो गुड़ाक पूरा एक्सटेंसिव तमर तार एग्जांपल अछि जोग्राफर्स मानकर रोमन जोग्राफर्स मानकर टॉलेमी सब लिखिचंती तमर ताम्रलिप्ति प्रतिष्ठान ए सब पूरा पोर्ट विहारिका मेडू एगुड़ाक सेटलमेंट गुड़ा सतवाहन सेटलमेंट गुड़ा जो गुड़ाक रोमन ट्रेड ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା एमाने रोमन ठू नौथिले कोन नौथिले ऑयल नौथिले वाइन नौथिले गोल्ड नौथिले और रिटर्न रे तांकू निज जिनिस गुड़ा दौथिले और जो माने कि सिल्क रूट को भी कुशाणस माने करते तो गोल्ड रो सब बेले कंटिन्यू गोटे आसीबार गोटे 600 वर्ष तक गोल्ड आसीला but then suddenly gold became a very rare material in India after the Gupta even the Skandagupta time रे तमे देखिबा gold रो जो percentage अछि in the coin it remarkably reduced during the time both 10% 20% of gold खाली कोट है कि रोथला gold रो and all the material was the mixed material alloy material so that's why eta कुहा गला कि इकोनॉमी तमरा डिसेंट्रलाइज्ड होची तमरा एगारियन इकोनॉमी होची तमरा गोल्ड रो पॉसिटी कॉइन रो पॉसिटी को देखौची करेंसी नाही सेंट्रलाइज सिस्टम न हेले करेंसी रो किछि मीनिंग नाही खाली रीजन रे केते करेंसी सर्कुलेट हबो देन बाटर सिस्टम अगेन आसु सो दिस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया किंतु मैडम कुषण रो जो भीम काथफेसिस अछन तांको टाइम रे बहुत गोल्ड कॉइन इशू होतला जोटा कि गुप्त रो भी टी फाइन फाइन वर्जन सेटा बना हितला मु जहा टी जानि छी आपन टी क्लैरिफाई करिवे yes Indo-Greek mu कहली बा Indo-Greek were the first who issued this Gupta gold coin in this gold coin जो गुप्ता रो जो आइडिया आसुची गोल्ड कॉइन रो they are borrowed from this the Indo-Greek and Kushana's coin system ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ହିସାବରେ ନିଜର କଏନ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତର ଯୋଉ ଇୟରଲି କଏନ ଅଛି ତମେ ଯଦି କୁମାର ଦେବୀ ଟାଇପ କଏନ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ଇୟରଲି କ୍ୟାରିୟର ର ବା ଯାହାକୁ ବି କୁହା ହୁଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମେ ବି କିଛିଟା କଏନ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇୟରଲି କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବ ତ ସେମ୍ ହି ଇଜ ୱେରିଂ ଦ ସେମ୍ ବୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଉଜର ଇନ୍ ହିଜ କଏନ ଯେବେ କି ଲେଟର ଫେଜ ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଧୋତିରେ ଆଉ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଇମେଜେସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି this is very interesting history of coin ସେଥିପାଇଁ ଥାପ୍ରିଆଲ ବୁକ୍ ଇଜ very good to understand that so ये जो ड्रेसिंग रो भी तांकर देखियो ड्रेसिंग तांकर जो लेजेंड्स गुडा तो से रिमिंट करूचंती इंडो ग्रीक कॉइन्स गुडा जो गुडा सर्कुलेशन रे थिला नॉर्थ वेस्ट रो जेतेले गुप्त से गुडा जगह को ऑक्युपाइड करूचंती से माने से कॉइन गुडा को रिमिंट करूचंती डिफरेंट टेरिटोरीज रे हैला yes थैंक यू so so where we were so there are sources like inscriptional evidence एई टाइम रे तमरो कॉपर प्लेट ग्रांट अछि प्लस आहुरी इंस्क्रिप्शन अछि लाइक नासिक क्रेव इंस्क्रिप्शन अछि पुलकेशिन कर जो होल इंस्क्रिप्शन गुडा को बहुत सारा डिफरेंट इंस्क्रिप्शन तमे पाइबो एंड देन अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर रिकॉर्ड जो चाइनीज ट्रैवलर्स माने आसुथिले तांकर अकाउंट्स गुडा को फाइन वेंसंग लेटर ऑन वेंसंग कर इत्सिंग कर अकाउंट गुडा को अछि रियली मेडिएवल ये को जानिया पे then there are indigenous sources like तमरो एपिक्स गुडा का आसी जिवो पुराण गुडा का आसी जिवो जोडा को कंस्ट्रक्शन होउची then ड्रामा कालिदासन करे जोडा को होय the main conflicting एठी मु तुमको गुप्त बा पोस्ट गुप्त पढोनी एठी मेन जिनिस दुईटा जिनिस तमे अर्ली मेडिएवल रो कांसेप्ट माने रखिवा क्वेश्चन आसी पारे डिबेट्स ऊपरे whether this Indian early medieval system was a feudal India रे गोटे feudalism थिला बा इंडिया रे feudalism नथिला आउ गुप्त कॉइन Gupta time was a golden age or not these two concept these two debate is much crucial तमको इंटरव्यू रे पचारे पारंती तमको क्लास रे पचारे पारंती तमरो एग्जाम रे आसी पारे that whether the golden Gupta टा golden age थिला ना नाही ता विषय रे तमे पढ़ी परिबो इंडिया रो फ्यूडलिज्म विषय रे जोटा कि गोटे ओल्ड मार्क्सिस्ट थ्योरी कि इंडिया रे फ्यूडलिज्म थिला कहि कि जहा को काटुचंती डिफरेंट स्कॉलर इन 2000 पर स्कॉलर माने it was given by the Marxist historian like R.S. Sharma ki India re feudalism thila this is the book if you can see it Indian feudalism by R.S. Sharma
ओके दिस इज आमे तांको रिकमेंड करो बहुत हाई लेवल रे रिसर्च कला बेलू बट बहुत सारा थ्योरी एबे चेंज हो जाय आई विल टेक इनटू दैट सेटा भी मु तुमको कहबी सो दिस इज द गुप्ता तुम कौन करिवो मु तो पढोनी तुमको बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम मु कहि दोछि तुम कौन कौन पढिबा कथा गोटे तमे गुप्तार एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पढिबो दैट हाउ गुप्ता एमर्ज्ड गुप्ता मानकर स्टेट फॉर्मेशन जो होछि से रीजन रे सेटा केमिति होछि दे वर दी प्रोविंशियल गवर्नर्स गुप्तास माने कि गोटे गोटे एम्पायर नथिला पूर्वरु जब yearly history of Gupta देखिवा see they were maybe the provincial governors but later on they decline when the Kushana's dynasty ଯେତେବେଳେ split କରୁଛି ସେତେବେଳେ Gupta they declare themselves as a political power ସେଇଥିରେ matrimonial alliance ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ is talking about the ଲିଚ୍ଛବି ଦୁହିତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କି ସେ ଲିଚ୍ଛବୀୟ ବଂଶର ସେଥିରେ ସେ matrimonial alliance କୁ ସେ ବେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ his father Chandragupta first married to the Lichabia princess, and that elevated their position from some caste to this Kshatriya caste. जोंथिरे से निजको लिच्छबीय कहि कि कहउचंती ना कि निजर फादर रो identity को नउचंती. So that's about the origin of the Gupta. You can read about that, and you should understand the nature of the state under the Gupta. It was also a monarchical state, but not very centralized like the Mauryans. Okay, Mauryan को भलिया एटा गोटे सेंट्रलाइज सिस्टम नथिला एटा बेसिकली तमरो डिसेंट्रलाइज थिला जोंथि डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस रे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स थिले आ क्वाइट इंडिपेंडेंटली भी रूल करूथिले समुद्रगुप्त रे जतले कन्क्वेस्ट तमे पढिथिबो political history re you must have known that he adopted this theory of conquest and liberation conquest kale then liberate kale conquest kale then liberate kale so that's why it is not considered as a he united all the India once upon a time he liberated them and these dynasty the provincial dynasty were very much independent to rule according to their own ideas and not that so eta Gupta dynasty gote thila but they don't have this standing army large army like the Mauryan they didn't have the currency to give the salary to this official so that's why and you can write about the nature of the state under the Gupta while the king is adopting this heavy title like they were equal to the god they are Rajadhiraja Rajadhirishi Parama Rajadhiraja these are the epithet they adopted to elevate their position in Allahabad pillar inscription you can read Allahabad pillar inscription also just write small point which I am telling you okay now you can read the Allahabad pillar inscriptions lines it is partly written in the verse and partly written in the prose okay and it is the complete documentation of what is the achievement of Samudragupta so king will be the head of the power and then there will be a system of sub infeudation जोउथरे कि तमर बहुत सारा लैंड ग्रांट्स गुडा को भी दिया होतला विल टॉक अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन रे किंग सब टू हायर रे पोजीशन रे रहिबे देन देयर आर किंग ड्यूटीज मेंशन in the different texts like Puranas गुडा को जो लेटर फेज रे लेखा होची से माने गुप्तंकर पूरा गोटे क्रोनोलॉजी दोछंती किंग्स मानकर they are writing about the king's duty and all also it is about the concept जो divine equal to the god concept जो आछुची सेथि समुद्रगुप्त कहउचंती निजको पर जो हाई टाइटल हेवी टाइटल रे नउचंती कुबेर सहित निजको इक्वल कहउचंती इंद्र सहित निजको इक्वालिटी रे रखुचंती so these are the nature of at this time the state council of minister will be officials रहिबे like the Mauryan empire we have discussed it फाहियन कर किछटा accounts अछि justice system थिला महादंड नायकर so quite it's a updated version of Kautilya Arthashastra जोंथिरे सबु machinery अछि but it was not strictly monarchical like it was in the Mauryan time हाई ऑफिशियल कर विषय लेखा है प्रतिहार महाप्रतिहार जो माने टैक्स कलेक्शन करिवे लैंड ग्रांट्स गुडा को दिया है जो माने लेखिबे दूत रहिबे एस्पिनज रहिबे जो स्पाइस गुडा को रहिबे सो गोटे स्टेट ए मानन को ने की गोटे स्टेट हुए तो गुप्तम कर स्टेट पॉलिटिक्स रे कोन कोन एलिमेंट थिला यू कैन राइट दैट आर्मी विषय रे तमे लिखि दे परिबो
that how many armies were there: Pilupati, elephant, Aswapati, head, Narapati, foot soldiers, the head of the foot soldier. That indicate that they have this long tradition of army, but it was not a very standing army. जोटा कि occasionally लेखा है चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड का टाइम रे और समुद्रगुप्त का टाइम रे आर्मी गुड़ाकर विषय लेखा है. अदरवाइज we don't have exact information how much salary was there, how much army was there under the Gupta. तो एटा भी कुआ पारे कि मनकर किछटा प्रोविंस रो आर्मी को नै कि से माने गोटे टाइम रे यूनाइट करथले to face some challenges. And during the time of this Shaka ruler, when he invaded the Gupta dynasty, during this time of Chandragupta jitla asinanti jota Devi Chandraguptam ro plot hochi jota ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ଅଛି they were not prepared to check the invasion of the Shaka ruler. So କିଛିଟା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଯେହେତୁ paucity ଅଛି coin ର later phase ରେ ଏତେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, but then also we know about that the Guptas were the very imperial ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିଷୟରେ you can write something about that, not very grandeur way, but in a normal way. Revenue administration, yes, revenue administration is a very important functionaries of the state, where they used to collect the revenue from the land, from the agricultural land, from the forest land, from the grazing land, pastoral land jaku kuha hue. There are servant and the tax collector, like the record keeper pushtapala jo mane ki record lekhibe. So there was a well elaborated system, regular department of proper survey of measurement of land and collection of the land revenue. Land को measure करके land connection करिवार अछि. Fine विषय रे लेखा है fraud जदि करूछंती वा fine दउनांती. There is a officer like Gopasarmin working as a Akshta Pataladhikrita in the time of in the time of Samudragupta, जो माने कि अकाउंट रजिस्ट्री काम गुड़ाक देखिए, अकाउंट को देखिए अष्टलपट्टाधिका एमती बहुत सारा अछि. गुप्ता डायनेस्टी रो पॉलिटी विषय रे तमे लिखिबे परिबो, इग्नो मटेरियल अछि तम पाखरे. Then there are some other book of ancient Indian history that they will give you a vivid account of Gupta polity. So the main thing is about the province and district. Tapare province asibo. I have mentioned all this list of bhukti जो गुड़ाक थिला सेमानकर जो स्टेट थिला गुप्ता मनकर सेटा प्रोविंसेस रे डिस्ट्रीब्यूट हेतिला. प्रत्येक प्रोविंस को भुक्ति कहि कि कहउतला जोटा जोटा कि विषय भी किछि जगह रे लेखा है. विषयपति विषय जो माने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स गुड़ाक रहितले ताते आयुक्तज रहिबे, विषयपति रहिबे, लाइक दैट. तो प्रोविंस रे डिस्ट्रिक्ट तापरे विलेज रे बेसिकली पंचायत रहिबे. देन देयर वर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक मोरिया रे जेमिति सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन रो अलग थिला, जेगुडा नगर श्रेष्ठी जेमिति को आउतला सेमिति एठी भी तमर नगर श्रेष्ठी अछंती, हेड ऑफ द सिटी मर्चेंट्स, सर्तवाहन कारवा लीडर, कारवा माने जो मर्चेंडाइज कम्युनिटी माने जो जाउथिले ट्रेड करिवा को सेमानको केमिति प्रोटेक्शन दिया हबो. Then there are names they have found from the different record, basically votive record, because Gupta को टाइम रे तमरा बुद्धिज्म भी बहुत फ्लोरिश करथिला. लाइक तमरा बनारस स्कूल ऑफ आर्ट जोटा अछि, तमको कुशानास टाइम रे तमे लेख मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड तक्षशिला स्कूल ऑफ आर्ट, सतवाहन टाइम रे तमे लेखिछ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, सांची स्कूल ऑफ आर्ट, लाइक दैट. गुप्तंकर टाइम रे से माने पैट्रोनाइज करथिले बनारस स्कूल ऑफ आर्ट बा सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट जो तमे पढुछ पढिछ बा तमे देखिछ कैपिटल रो जो अणा हिछि लोगोटा इंडिया रो सत्यमेव जयते तले लिखे छे. बाकी सत्यमेव जयते the quote borrowed from the Mundak Upanishad, but the capital, the four lion sitting back to back, is belongs to the Sarnath capital. It is a Buddhist capital. Pillar upare Buddha ki kare jo sorry, the pillar jo Ashokan pillar ro capital seta. Okay. So that is that they patronize all the religion. There are stupas in the Sarnath which belong to the Gupta dynasty, so Gupta period, and then there are Hindu temple. Gupta were the first ruler who with the influence of Buddhism, or you can say without it, whatever your idea is, you can read more and more. They have
credited with the construction of the first Hindu temples को जो थे सांची टेम्पल नंबर 19 जो थे भीतरगांव रो टेम्पल नाचना कोठारा दुर्गा टेम्पल these are the some of the yearly temple of India okay Indian sub India रो सबुठु फर्स्ट हिंदू टेम्पल्स गुडा को जोटा गुप्त माने ही फर्स्ट टाइम तयारी करूछंती ता पूर्वरु जो गुडा अछि तार बुद्धिस्ट एंड जैन एंड आजीविका जोटा yearly caves गुडा अछि cave and structural stupas गुडा so you can write about their religious nature जो थे coins रे भी तमे देखिबो तांगर केमिति जो चक्र विक्रम टाइप coin अछि गोटे जे they are patronizing Vaishnavite cult गरुड़ तांकर एम्बल थिला royal insignia थिला so how the religion played a vital role sanskritization को केमिति से patronize करूछन्ते you can write about them also and the land grants basically about the land grant जो थे legitimization रो process गुटे start होची land grant so I was telling you the yearly medieval process रे सबुठ important component तुमको पचरा हबो कि whether Gupta dynasty were golden age or not और जदि golden age थिला बा नथिला तार कोन theory अछि जेमिति मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहले कि गुप्ता चंद्रगुप्त is not referring or समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त second and समुद्रगुप्त not referring about Kalidas Kalidasangar time बहुत परे आसुची we don't know whether Kalidasa was contemporary of Chandragupta or not तापरे को आउची माने जो कॉइन को रीमिंट कले माने किछि नुवा कॉइन इंट्रोड्यूस करनांती तापरे को आगला कि जो टेंपल एक्टिविटीज गुडा ता परे अर्ली मेडिएवल इंडिया रे अधिक बढुची माने पल्लवास आर क्रेडिटेड टू मेक दिस ग्रैंडियर टेंपल पल्लवा टेंपल माने तो सबुटु फर्स्ट स्ट्रक्चरल टेंपल जदी कहबो पल्लवास मनकर आसुची बहुत एलाबोरेट टेंपल्स गुडा शोर टेंपल कांचीपुरम रे टेंपल ए जो ममल्लापुरम सो सेने कहले टेंपल तो गुप्तास वाज नॉट एट ऑल ए गोल्डन एज तार आहुरी कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज गुडा अछि आउ कुशानस रे जेहेतु रोमन ट्रेड थिला कॉइन्स आसिला तमर स्कूल ऑफ आर्ट होची मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पूरा डेवलप करूची तक्षशिला स्कूल ऑफ आर्ट आर्ट आर्किटेक्चर टू नेकी कॉइन टू नेकी डिफरेंट सिटी एंड कॉइन्स बहुत होची इकोनॉमी होची इंटरनेशनल ट्रेड होची जोटा गुप्ता टाइम रे पूरा बंद हो जाउची इंटरनेशनल ट्रेड टा so that's why the Kushanas were the golden eta Marxist theory thila so you can read more elaborately about that next class re jodi kichi bujhi na pariya mate question bujaya the next indifference between the Marxist and nationalist historian which is a part of your curricula is the debate over the feudalism jetbele yearly medieval को first man study kale post gupta polity जोटा कहूची disintegration होची is there any note board is here yes I don't know how to use it leave it so तमरा जितबेले first तमे देखिबो let me tell you टिके ध्यान से सुनि जबो shortly मु कहबी बेसी elaborately तो हे परिबनी idea ta de devi then you can read more about it the best thing is you can read about the article written by the Harbans Mukhia or IGNOU material itself is good for a overall understanding of early medieval politics early medieval mane 6th century BC AD to 12th century AD को early medieval को आवे medieval आसी आबरे गुप्ता decline करे ए early medieval time रे कोन होची basic features होची कि लोक ए विषय रे जानि नथिले 60 70s तक भी तमे देखिबो लोक खाली गुप्ता जो नेशनलिस्ट राइटर्स माने बेसिकली गुप्ता विषय रे लिखुचंती गोल्डन एज विषय रे लिखुचंती बा आरसी राय चौधरी तमरा नीलकंठ शास्त्री you will see that they are writing about the this something जोटा colonial history against him but ये जो फेस थिला जो 6th century पर फेस टू 12th century आसीबा तक तापर लोक medieval कथा होतले they have neglected all this history of regional state माने पल्लव चालुक्य पांड्य राष्ट्रकूट फॉर एग्जांपल ओडिसा रे सोमवंशी गंगा केते डायनेस्टी आसुछंती चांदेलस तमरा प्रतिहार गौड़ पाल different एरिया पूरा इंडिया रे तो एठी किछिटा फीचर्स होछि लाइक proliferation of the caste vernacularization of the language vernacularization of the regional sentiments एगुड़ा को कोन एगुड़ा को होची डिसेंट्रलाइजेशन द इयरली मेडिवल फेज वाज द फेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जेतले से माने पढिबा स्टार्ट करले इयरली रे बहुत सिंपल लैंग्वेज रे कहूची जेतले माने स्टार्ट करूचंती हिस्टोरियंस माने इयरली मेडिवल फेज को देखिया लाइक आर एस शर्मा नो डाउट ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट हिस्टोरियन
से बहुत भल से प्राइमरी सोर्स गुड़ाक स्टडी करिसंती बट ही आल्सो रिव्यूड हिज आर्टिकल टिल 2001 जते पर्यंत से बंची थिले सेते पर्यंत 2001 रे तांगर लेटेस्ट फ्यूडलिज्म ऊपर अपडेटेड आर्टिकल आस्थिला जोथिरे से अर्बन डिक्लाइन रो आइडिया टाकू रिट्रीट करूछंती सेथिर किछिटा फीचर्स से देले तो फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन जोटा फ्यूडलिज्म तापरे हमें आउरी पढी परिबा सो दैट देयर आर सो मेनी डायनेस्टीज आर केम ए जो पल्लव तमे माने एटा पढी दबो दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एटा गुडा तमे पढिबो न पढिले तमे बुझी परिबो ना लाइक पल्लवस रो हिस्ट्री चालुक्य रो हिस्ट्री हर्षवर्धन सेटा पॉलिटिकल हिस्ट्री they were also monarchical in politics monarchical माने से किंगडम गुडा को even though they are regional and डेक्कन हो बा साउदर्न तमिलकम हो बा तमर सेंट्रल इंडिया हो बा वेस्टर्न गुजरात और राजस्थान रीजन हो इमाने रीजनल थिले तांकर नेचर था होतला रीजनल but they were the kings okay they declared themselves as a monarch राजाधिराज और समथिंग लाइक दैट सो इमानंक भितरे केमती स्ट्रगल होची जोटा कि साउथ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री रो गोटे पार्ट यस मैम मोनार्चिकल मीन्स आई जो कैन थिरे अंडरस्टैंड हाँ monarchical माने monarch जो थिरे head of the king will be the head of the state the first sentence it is written that king was the head of the state monarch जो थिरे head रोइबो king जो थिरे head रोइबो सेटा monarchical oligarchy hela republican hela जो गुड़ाक group of people will rule the country okay india ra jo system the kingship system in the hereditary form was the most fundamental thing in the polity indian ancient polity ancient kono medieval रे भी जो थे किंग हेड रहिबे तांका अंडर रे पनिशमेंट क्राइम लॉ फॉर्मुलेट करिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर मानन को अप्लाई करिबा अपॉइंट करिबा ऑल दिस ड्यूटी was all this power was held in the hand of monarch the central power रहिबो आउ सेंटर रो जहा रहिबे बाकी माने ता वे करिवे हैला स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सो तमे एमानक विषय रे पढिबो पॉलिटिकल हिस्ट्री विषय रे ब्राह्मण स्कॉलर्स एथिरे तमरो सबुठु इंपोर्टेंट जिनिस हला लैंड ग्रांट्स the villages this is about the revenue system of pallavas and other thing eta tamar ignore ache you will see that now we will go to the two other concept which is the critical part of feudalism that is land grant let me tell you ye jo regional state guda ko form hela ए रीजनल स्टेट गुड़ाकर निजर लेजिटिमाइजेशन पाई if ए जो कैरेक्टर टा गुप्त फेज रु स्टार्ट हे जाउछे there were Bhakatakas ruler Gupta ruler they also issued this land grant in the form of copper plate दउछंती इन फॉर द रिलीजियस पर्पसेस रिलीजियस करूछंती मानेकर सैक्रिफाइस करूछंती अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ वाजपेय यज्ञ why these yajnas has been performed so many times to elevate a position from a king to the ultimate power ultimate authority निजो को से divinity theory रे से concept रे clear कर ए जो ideological claim होची ए ideological claim was given by the priest and the sacrifices जो rituals होची पानी पकेवा हाथी एलिफेंट आसीबे प्रोसेशन हेबा these are the legitimization process जो थिरे कि गोटे किंग निजो को हायरार्की रे रखुची हैला only money or power will not give you the prestige and the idea of king okay idea of king should be created and for that you have to create a new knowledge system जो थिरे तमे जणो को किंग बा ठाकुर राजा बा महाराज बा जणो को कहिबो हैला so that's why this land grant were the instrument you can say they were the instrument for these social processes तो इंडियन फ्यूडलिज्म जहाँ को कहला सो कॉल्ड फ्यूडलिज्म फर्स्ट जेतले स्टडी कराला सेतले आर शर्मा कहले एटा कि एटा एगालिटेरियन सोसाइटी हे गला गुप्त डिक्लाइन करी गले आउ किछि सेंट्रल सिस्टम रहिलानी कॉइन भी डिक्लाइन करी गला अर्बन सिटी गुडा जो गुडा क तमरो जेमिति कोसांबी होइला बा तमरो तक्षशिला हेले सांची हेला जति मेजर प्रतिष्ठान जो मेजर सिटीज गुडा कथिला सब एबेंडन हे गला इंटरनेट प्लीज म्यूट योरसेल्फ जते तमरा जते पोर्ट साइड गुडा अछि ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन ट्रेड एंड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द सिल्क रूट
जो अरब मर्चेंट्स गुड़ाक एमर्ज कर सिक्स सेंचुरी रे सेटा अरब रो गोल्डन एज कुआउची सेति इंडियन मर्चेंट्स माने स्क्वीज्ड हो जाउछंती इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे जाई पारु नांती कनेक्टिविटी जो रहउची सेटा अरब माने लीड करूछंती and Byzantine learn how to grow the silk in their own, so silk route ro bhi avastha kharab thila, Roman decline hi jaitila. So like this, these are the reason where international trade was declined, paucity of coin was there, Huna invasion hochi jothire ki Gupta empire ta bahut weak he jauchi. At that time this disintegration process started. ଯେତେବେଳେ disintegration होची तमरा टैक्स कलेक्शन हेबोनी, सेंटर रे जो टैक्स आसुथबो से टैक्स टा बंद हेगला, टैक्स बंद हेले करेंसी बंद हे जिवो, and that was the part of the decentralization of economy also. ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ତାଇ ପାଇଁ ଆରିଶ ଶର୍ମା କହିଲେ କି ଅର୍ବାନ ଡିକ୍ଲାଇନ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ ସିଟି ଟୁ एग्रीकल्चर लैंड को विलेजेस को शिफ्ट करूछंती कारण आउ नाही किछि तापरे पेट्रोनाइजेशन होउनी हमर पेट्रोनाइजेशन सरी जाउची बुद्धिज्म जैनिज्म एगुडा को पेट्रोनाइज आउ होउनी एगुडा को थ्योरी देखि इंडियन फ्यूडलिज्म को यूरोप रो जो फ्यूडलिज्म चलथिला शॉर्ट टर्म हिसाब रे से यूरोप रो फ्यूडलिज्म को एठी अप्लाई करले. Then later on he also many thing he changes in this theory and the 96 50 60s रे जो थ्योरी देथिले ताकू ही धरि की बसिले. आर एस शर्मा रो भी निजरो थ्योरी रो काफी सारा डिफरेंसेस अछि 2001 tak till he was alive. But the latest, if you want to read, you can read the Harbans Mukhya article on early medieval India and feudalism debate. सेटा तुमको गोटे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू भी दे परिबो. तो कौन रहिला चैलेंज केमती रहिला ए जो लैंड ग्रांट्स गुड़ाक दिया होतला लैंड ग्रांट वाज द राइट व्हिच वाज गिवन एटा गोटे लैंड रो राइट यार तीनटा ये हिसाब होता गोटे देवदान ब्रह्मदेय अग्रहार. देवदान माने जोटा ठाकुर को दियो माने गॉड को जदी डोनेट करा होतला, ब्रह्मदेय माने ब्राह्मणिक लोक सिंगल ब्राह्मण हो बा ग्रुप ऑफ ब्राह्मण जो शासन ग्राम गुड़ा को तुम कहूछ. ब्रह्मदेय अग्रहार अग्रहार माने प्रीस्ट मानन को किछटा दिया होतला जोटा बेसिकली टीचिंग पर्पस पई गुड़ा को होतला. जेतेबेले किंग गोटे रीजनल फॉर एग्जांपल गुप्त वाज ए कंट्री ए गोटे मन कर गोटे गुप्त रोची सेटा डिसइंटीग्रेट हो जाउची डिफरेंट रीजनल पावर जेतेले गुप्त डिक्लाइन करूची डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गुड़ा को एमर्ज करूचती से माने निजरा ए पॉलिटिकल एलिवेशन पई निजो को गोटे पावर ये देवा पई से माने कोन करूचंती ए लैंड ग्रांट गुड़ा को दोचंती डोनेट करूचंती फॉर देयर प्रेस्टीज. सेथिरे कोन करिवे लैंड ग्रांट रो वेरी नेचर हैला सेथिरे निजरा एंसेस्ट्री देखेबे सेथिरे कोन कले निजरा एंसेस्ट्री को ट्रेस कले डिवाइनिटी थ्योरी रे माने मो फोर फादर वाज द गॉड से आसिले गोटे गोटे स्टोरी क्रिएट हेबो सेठी कॉपर प्लेट ग्रांट रे गोटे गोटे स्टोरी क्रिएट हेबो जहार फिक्शनल कैरेक्टर गुडा को आसीबे गॉड गॉडेसेस आसीबे देव देव देवता आसीबे तापरे से माने कहबे आमे तांकर वंशज आमे एठी आसिलु आमे रूल करलु तापरे बड़ बड़ एपिथेट गुडा निया हेबो लॉन्ग टाइटल्स गुडा को निया हेबो सेठी लेजिटिमाइजेशन हेबो दैट इज कॉल्ड द से ता भीतर फिर प्रोलिफिकेशन ऑफ द कास्ट अछि रीजनल स्टेट होछि रीजनल स्टेट रे फिर किंग्स रोचंती किंग तापरे सामंत सामंत तांकर फ्यूडल लॉर्ड्स गुडा सेमानक फ्यूडल लॉर्ड्स परे विलेजेस रोची ए पाई भी क्लास कास्ट प्रोलिफिकेशन होछि. तमरो जते आजी आजी जो सिस्टम रे तमे सोसाइटी देखुछो फॉर एग्जांपल ओडिसा रे भी ब्राह्मण अछंती ओडिसा रे भी तमरो बिजनेस कम्युनिटी अछंती करण अछंती तमरो तमिल रे भी ब्राह्मण अछंती महाराष्ट्र रे भी ब्राह्मण अछंती उत्तर प्रदेश रे भी ब्राह्मण अछंती क्षत्रिय अछंती तांकर तांकर निजर स्टेज रे ए जो रीजनल डाइवर्जेंस गुडा कहूची दिस वाज द टाइम दिस हैपेन इन द अर्ली मेडिएवल इंडिया. लैंड ग्रांट जते बेले दिया हला सेते बेले फर्स्ट स्टेज रे से माने कोन कले याकू रिलीजियस पर्पस पाई देले. सेकेंड स्टेज रे कोन कले जतेले कॉइन रो पॉसिटी देखिले गोटे डांस कोन कला धीरे धीरे लैंड डोनेशन दे बसिला एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑफिशियल मान को देबे कोन सैलरी दे सैलरी पार्ट रे लैंड गुडा को दे बसले केते समय तक लैंड देबे. फॉर एग्जांपल आंध्रा इज अ टेरिटोरी हाउ मेनी टाइम दे विल गिव द लैंड गोटे टाइम रे लैंड सरी जीवो तापरे ऑफिशियल मान को पावर दे बसिले लाइक आज जाओ टोल टैक्स कलेक्शन करिवो तमे जाओ टेंपल नै जाओ तमे जाओ पनिशमेंट जजमेंट एंड पनिशमेंट पावर भी नै जाओ एमिति करे कि धीरे धीरे पावर भी शिफ्ट ही चलला सेंटर टू रीजन को पावर शिफ्ट है सेंटर टू रीजन फाइनेंस शिफ्ट है सेंटर टू रीजन पावर मिलिट्री पावर सेंटर टू रीजनल तो रीजनल स्टेट गुड़ा को मच पावरफुल हो गले ए टाइम रे पोस्ट गुप्त टाइम रे आ ए रीजनल स्टेट गुड़ा को निज निज ना रे शासन कले निज ना रे दान कले निज फैमिली को एलिवेट कले आउ तापरे तांको तांको भितरे वार हला जो गुड़ा को तमे पल्ल बचा लुकेस भितरे वार देखुछ हला दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ बट इट वाज नॉट दैट
कि एटा डिक्लाइन हे गेला, अर्बन डिक्लाइन हे गेला. There are so many cities emerged in the early medieval India, like तमर religious centers गुड़ा को अछंती. For example, तमर कांचीपुरम नहीं पर पल्लवरम ममल्लापुरम नहीं, तमर तमर जो जो डायनेस्टीज गुड़ाकर कैपिटल्स गुड़ाक अच्छी. फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन डायनेस्टी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो मीनाक्षी टेम्पल जो अच्छी तमर तांजोर रे अच्छी. एमिति किछि बहुत सेंटर एमर्ज गला. देखे सेकंड जो कहले इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन करिगला, इटा डिक्लाइन तो करिनी, बट इट इज शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न कोस्ट. जो वेस्ट आड़ को जो रोमन सहित ट्रेड थिला, इट वाज शिफ्टेड टू द ईस्टर्न बेल्ट. लाइक तमर जो जाभा सुमात्रा जो जाको एमानक सहित ट्रेड थे चलिला. कॉइन जो कॉइन रो कांसेप्ट आनले कहले पोसिटी ऑफ कॉइन हे गेला, कहले एग्रीकल्चर हे गेला डिक्लाइन हे गेला. तमे कहि परिबनी गोटे सोसाइटी बिना कॉइन रे भी रही पारे जदि रीजनल स्टेट्स गुड़ा अछंती, बट दे वर मच पावरफुल, वेरी पावरफुल. दे एमिति लोके कि लोक पूरा इकोनॉमी डिक्लाइन करि जाउची, because they don't have to depend on the coins all the time. एग्रीकल्चर अच्छी काइंड रे टैक्स दउछंती, काइंड रे चलुची. एग्रीकल्चर होची लार्ज स्केल रे. ए टाइम रे डिफोरेस्टेशन होची. जो जत्ते बेले रीजनल स्टेट हे गले सेते लैंड कन्फाइंड हे जाउची, लोकों को कन्फाइन करी रखा होची. क्लोज्ड इकोनॉमी, हां, दिस इज अनडिनायबल. दिस इज द कांसेप्ट कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी. आंध्रा लोक ओडिसा को जाय परिबनी, ओडिसा लोक सेंट्रल कंट्री को जाय परिबनी, सिटीकार लोक आउडे काहे की कारण गोटे रीजनल स्टेट रो इनकम हैला एग्रीकल्चर. ए एग्रीकल्चर को डेवलप करिया पे से माने कोन करथिले, से माने लोकन को आनी की गोटे फॉरेस्टेड रीजन गुडा जो एरिया रे एग्रीकल्चर हो नथिला, से एरिया लागि लोकन को पॉपुलेट करथिले ताकि से एरिया रे एग्रीकल्चर हो, अधिक अधिक एग्रीकल्चर गुडा को इंक्रीज हो. जहा पई बहुत सारा टैक्स भी लिखाई छि ए टाइम रे अर्ली मेडिवल इंडिया रे. तमे हर्षर चरित लेख, तमे कृषि पराशर देख, तमे डिफरेंट टैक्स देख. अर्ली मेडिवल समस्त मैन्योरिंग फील्ड, हाउ टू कल्टिवेट द फील्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, इरिगेशन. तमरा नाडु सिस्टम रे जो साउथर्न इंडिया रे जो कोकोनट प्लांटेशन होची, सब अर्ली मेडिवल टाइम रो डेवलपमेंट. तो से माने एग्रीकल्चर को बेसी एम्फसाइज दउछंती ए टाइम रे. सेहि पय कोन होची, लोक छाडी कि न पळांतु कहि कि जो 1820 टाइप, देयर आर 1820 टाइप ऑफ टैक्सेस मेंशन इन द अर्ली मेडिवल सिस्टम. टैक्सेस इंपोज कराउची लोकन को ऊपर कि तमे अधिक अधिक कल्टिवेट कर, अधिक अधिक टैक्स लगा. कारण रीजनल स्टेट डिपेंड करूची एग्रीकल्चर ऊपर, आउट नाही ट्रेड नाही कि आउ कहा ऊपर डिपेंड करिवो. इंटरडिपेंडेंसी सरी जाईची. दे व्हाटएवर दे हैव टू फुलफिल देयर रीजनल किंगडम्स. आ ता भितरे वार होची, ता भितरे डायनेस्टीज गुडा चेंज होची, जोतरे चालुक्य आउ तमेरे राष्ट्रकूट, पल्लव एमानकर पॉलिटिकल हिस्ट्री गुडा को अछि हैला. सो अर्ली मेडिएवल रे खाली पॉलिटिक्स स्टेट नुह, सोसाइटी, सोशल स्टेटस, प्रोलिफिकेशन ऑफ द कास्ट, रीजनल रीजनल सेंटिमेंट से राइट. लैंग्वेज गुडा को चेंज हेगला. संस्कृत रो जोटा दुईटा कांसेप्ट अछि, डेथ ऑफ संस्कृत और इट्स चेंजिंग इटसेल्फ, व्हाटएवर इट वाज. संस्कृत रो तमर जो लैंग्वेज गुडा को तमे देखिबो, ओडिया, बंगाली, एपटे गुजराती, जो लैंग्वेज गुडा को रीजनल स्टेट गुडा को एमर्ज करछि. So early medieval was, that's why, very crucial. बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एटा. सेति पई थ्योरी ऑफ फ्यूडलिज्म जोटा होची बहुत बड़ डिबेट. ए डिबेट को आज जाए हिस्टोरियन मानक भितरे कॉन्फ्लिक्ट अछि, जोथरे कि से माने फ्यूडलिज्म को बुझिया पई चाहुचंती. देयर आर सो मेनी थिंग्स आई हैव रोट, बट आई कांट ये सेथरे वर्धन भी टिके पढि दो, बट दिस इज नॉट वेरी सेथरे किछि नाही. बट दिस इज अनदर slide which I have made for my PG student, that is feudalism debate. Mu shortly कहि दोची, there are so many debates for the early medieval system, whether India रे feudalism थिला या न थिला. तो जिते भी यार गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे दैट feudalism debate ऊपरे, feudalism thesis कहि कि भी कहला. एथिरे काफी सारा थ्योरी अछि, लाइक सेंट्रलाइज्ड मोनार्चिकल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूडल स्टेट, सेगमेंटरी सोसाइटी, सेगमेंटेशन केमिति होची सोसाइटी रो, लाइक दैट. ओके, तो बहुत सारा थ्योरी गुडा को बिल्ड होला. सेगमेंटरी ता बटन स्टैंड देथिले, एटा बहुत टाइम रे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसे. आई डोंट नो इग्नोर रे शॉर्ट क्वेश्चन आसु नथिबो एबे, बट later on when you will go to the other examinations, स्टेन बटन स्टैंड रो आसे. बटन स्टैंड हैज गिवन दिस कांसेप्ट ऑफ सेगमेंटरी स्टेट, बट से काहा को देखिले, से चोल स्टेट को देखिले. चोल माने जेमिति स्टेट फॉर्मेशन सेठी हैला,
ताकू देखिकी से सेगमेंटरी स्टेट रा मॉडल टा देले जेथिरे कि से कहले कि सेगमेंटरी स्टेट गुड़ाक एमर्ज करूछि सेठी चोल माने गोटे अल्टीमेट पावर गुड़ाक कि एमर्ज करूछन्ते. It was confined to the Chola, but it was not true in the sense of Odisha, in the sense of Gujarat, in the sense of Chalukyas. तो सेठी पई एटार किछिटा ये अच्छी तापरे जेम्स टॉड रो अच्छी लॉर्ड भेजल्स रिलेशनशिप टॉड राजस्थान रे काम करथिले से देखिले सेठी भी रहउचंती तो से नाइट सहित यूरोप रो जो नाइट फ्यूडलिज्म रो नाइट लॉर्ड भेजल रिलेशनशिप रे से एठिकार जो गुजरात एरिया रे जो आर्मी गुडा को रहउथिले सेमान को देखि कि टॉड स्टडी करथिले कि एठिकार फ्यूडलिज्म यूरोप रो फ्यूडलिज्म सहित केते मैच करूचे बट इट वाज डिस्कार्डेड बट कनक्लूजन रे मु एटा कहि दे परिबी इंडिया रे इयरली मेडिएवल स्टेट गुडा जो एमर्ज करूची चाहे ओडिसा रो हो चाहे बंगाल रो हो सेंट्रल इंडिया रो हो समस्तंकर निजर हिस्ट्री अछि. इट वाज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द इंडिया. गोटे सिस्टम रे गोटे भेजाल रहइबो गोटे किंग रहइबो सामंत रहइबो गोटे ही सामंत प्रथा रे चलिबो सेमिति नथिला सेति गोटे बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट गिवन बाय द ये दिस हरमन कुलके हालांकि एथिरे किछि गोटे प्रॉब्लम अछि बट ही आल्सो गिव दिस ओडिसा को गोटे एग्जांपल दे कि से कहचंते कि केमिति जगन्नाथ कॉल्ड इज सराउंडेड विथ दिस कांसेप्ट ऑफ रीजनल स्टेट जेतेले एमर्ज करूछंते जोथिरे पैट्रोनाइजेशन रोची एंड अदर थिंग. So this is about the feudalism debate. You can read about the many things. एथिरे मु लेखि देछि. I think in the latest collection of the essay published under the title Early Medieval Indian Society Study of Feudalism in 2001 in New Delhi, he revised. R.S. Sharma has revised this his argument on the feudal mind. जेथिरे से आर्ट आर्किटेक्चर कथा कहउछंती. लेट मी शो यू सम अदर एग्जांपल जेमिति कि स्टेप वेल हो बहुत सारा टेंपल हो. यू आर यू एबल टू सी दिस एगुड़ा को स्टेप बेल गुड़ा को मंदिर सहित स्टेप बेल गुड़ा को इयरली मेडिएवल रो एटा इमर्जेंस इयरली मेडिएवल टाइम रे स्टेप particularly not this stable but इटा कंटिन्यू करूची टिल मेडिएवल एंड लेट मेडिएवल पीरियड तक जो थरे ए रीजनल स्टेट गुड़ा को जो कुहा गला डिक्लाइन करी जाउची इकोनॉमी तमे डिक्लाइन कोन पई कहउछ जेबे कि रीजनल स्टेट निजर स्टेट को बहुत डेवलप करिसंती. फॉर एग्जांपल यू विल सी द द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट तांकर निजर निजर चोलर निजर आर्ट थिला जो नटराज इमेज और तमे ब्रोंज इमेजेस गुड़ा देखुछ तांकर निजर ट्रेड थिला मिलिटरी थिला. ओडिसा रो भी तमे सेमिति टेंपल भुवनेश्वर टेंपल सिटी देखि परिबो जो गुड़ा को तबरे तमर प्रतिहार चांदेलस मानक खजुराहो स्कूल ऑफ आर्ट नगर स्कूल ऑफ आर्ट तमर पाळ गोडिया मानकर सेपटे अछि तो लार्ज टेंपल एक्टिविटीज हैज हैपेंड. बाउरीज गुड़ा को होची गुड़ा को स्टेप बेल कांसेप्ट होची. एग्रीकल्चर जेतु मेन कंपोनेंट ए टाइम रे सेहि पई स्टेप बेल गुड़ा को क्रिएट करा होची टू फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस. सब मंदिर सहित गोटे टैंक रहइबो. टैंक विषय रे इवन पल्लवज रो मु एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी रे पढेलिनी बट पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन रे अछि जो गुड़ा को मिनिस्टर्स अछंती जो माने पानी को देखिबे वाटर केमती सबआडे स्प्रेड करूची ना नाही. This is another step well. This is one of the largest step well of India. In Gujarat, Adi Bhav. There are so many Avaneri Bhav, Adi Chand Bhauri भी कहते हैं आपको. There are so many staples in India from the north to the south with associated with the temple or without the temple. But यार गोटे जिनिस रहउची तमरा कि एगुड़ाक सब इयरली मेडिएवल रे डेवलपमेंट जो थिरे एग्रीकल्चर वाज द मेन कांसेप्ट सबले मने रखिबो. लैंड ग्रांट हेल्प to these kings to legitimize their position in the society for the proliferation of the caste. एथे मिक्स्ड कास्ट गुड़ा को बहुत आसुचंती जेहेतु अनुलोम प्रतिलोम मैरिज सिस्टम यू मस्ट हैव हर्ड इट जो थिरे रहउची मिक्स्ड कास्ट गुड़ा को आसुचंती जो मानको मिसा होउनी मेन कास्ट रे तो बहुत सारा कास्ट एमर्ज करूचंती निजर निजर रीजनल सेगमेंट्स रे है ना सब स्टेट रो निजर निजर रीजनल स्टेट रे कास्ट गुड़ा को आ जेहेतु बहुत सारा लैंड एग्रीकल्चर जोन रे आसी जाउची मेडिटेटर्स गुड़ा को अधिक होउचंती इंक्रीज करि जाउचंती माने किंग्स आउ पीजेंट रहिले. पीजेंट माने जहा पाखरे लैंड रहिला किंग माने जे की ऑनर ता मझिरे रहिले सामंत फ्यूडल लॉर्ड जहा को कॉपर बेट प्लांट्स रे सैलरी दिया होउची. पीजेंट माने एठिरे गोटे क्वेश्चन उठुची एक्चुअली लैंड रो ओनर किए इधर पीजेंट
ପିଜନ ଯଦି ତାହେଲେ କିଙ୍ଗ କାଇଁ କ୍ଲେମ କରୁଛି, ଯଦି କିଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ କେମିତି କରୁଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି 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 କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଥିଓରି, ଯୋଉଥିରେ ଓଭରଲାପିଂ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଓଭରଲାପିଂ ଅଛି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି କି ଅନର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅନର କିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଷ୍ଟି କହିକି କୁହାହଉଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କି ଯାହାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ ମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ 18-20 ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଠି ନିଆ ହଉଥିଲା, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେତିକି ମିନିଷ୍ଟର ବି ରଖିବେ। ସେ ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ କପର ପ୍ଲେଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆହବ ସେତିକି ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ବି ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ବିକଜ ଦିଜ ଆର ଦ ଲାଇକ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ୱିଲ୍ସ। କପର ପ୍ଲେଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ବା 5 ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନା 10 ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ହୋଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଜ ଆର ଅଲସୋ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଥିଓରି। ସେଇଥିରେ ଫିର ଟେମ୍ପରିଂ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଫିର ଟେମ୍ପରିଂ ଗୁଡା କରାଯାଇଛି। ଓଭରଲାପିଂ ଅଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ଟେରିଟୋରି ମନେକର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଫର ଜୋନ ଥାଏ, ଦୁଇଟା କିଙ୍ଗଡମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଫର ଜୋନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାକୁ ଅକ୍ୟୁପାଏ କରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେମାନେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶଶାଙ୍କ ଅକ୍ୟୁପାଏ କରିନେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ଓଭରଲାପିଂ ବି ରହୁଛି। ସୋ କପର ପ୍ଲେଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ର ତମେ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବି ଯଦି ମାରିଦବ, ତମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକल्स एंड बुक्स ରେ ମିଳିଯିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ, है ना। So that was all about the early medieval politics. There are so many things because এটা ଗୋଟେ ଛୋଟ history ନୁହଁ, from the post Gupta to the early medieval 1200 ମାନେ 600, ଏହାକୁ divide କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ରେ। ଗୋଟେ 6 to 900, 900 to 1200। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ early medieval ର ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି purely early medieval ଯାହାର ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଟିକେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ଇଗ୍ନୋ ମେଟେରିଆଲ ତମେ ପଢିକି ଆସିଥିବ, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଏବେ ପଚାର ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏନି ଡାଉଟ ହ୍ୱାଟ ଏଭର वी हैव डिस्कस प्लीज आस्क। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ यस ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, फिरोज। ସେଗମେଣ୍ଟାରୀ ମଡେଲ ଟିକେ କହିବେ ଚୋଲାର, ଏଠାରେ ବୁଝିହେଲାନି। यस इट विल टेक बटन स्टेन जो चोल उपरे काम करथिले से सेठिकार सोर्सेस को नेकी काम करथिले सेगमेंटेड सोसाइटी उपरे। सेठी सामंतवादी जो सेगमेंटेड सोसाइटी की अछि सेथिरि चोल माने गोटे लीडर हेकी केमिति एमर्ज करूछंती, बट दैट डजंट हैपन विद द अदर ये। I will elaborate it more if I can in next class mu de debi यार आंसर सेगमेंटरी मॉडल रो। बट जदि ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। सिंपली नेब तो या ही थिला जो फ्यूडल एगुडाक एग्रीकल्चर जोन्स गुडाक थिला, जो साउदर्न तमिलकम रीजन बा साउदर्न जोन गुडाक कुआउची चोल जो एमर्ज करूछंती पावर रे, सेठी लैंडलॉर्ड्स गुडाक एमर्ज करूछंती सेगमेंट्स रे। आ सेमाने धीरे 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 एग्रीकल्चर जोन रु सेमानकर पावर सेमाने इंक्रीज करिकी हाई माने रीच होचंती। आ सेठिरे चोल गोटे पावरफुल एई मानकु नेकी ए फ्यूडल लॉर्ड्स मानकु नेकी होची। देति पई सेगमेंटरी सोसाइटी सेगमेंटरी मॉडल ताकु नेकी कहला। आउ that was the fundamental। ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ ରେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ମୁଁ ପରେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଇ ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। मैम फेडरलिज्म जो डिबेट ଥାଇଥିବ ହଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ କହିଲେ ମାମା? फेडरलिज्म जो डिबेट्स ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ବୁଝି ହେଲାନି। फेडरलिज्म डिबेट ମାନେ କା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ? Okay, listen, feudalism होची वेस्टर्न वर्ल्ड रो कॉन्सेप्ट। जेतेबेले तमे वर्ल्ड रो हिस्ट्री पढ़िबो, वर्ल्ड रो हिस्ट्री पढ़िथिबो ग्रेजुएशन रे बा एथिरे थिबो, फ्यूडलिज्म पढ़ी के आस्थिबो सामंतवादी प्रथा जाको कुहा हुए हैला। आई एम नॉट वेरी गुड इन ओडिया बट आई विल ट्राई टू आंसर दैट। जोथिरे की पावर टा किंग रो हातरू धीरे 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 छाड़ी सामंत ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ। ସାମନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, କେମିତି? କାରଣ ଦେ ୱେର ଦ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କଡ ୱିଥ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ସାମନ୍ତ ମାନେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଉପରେ ରହିଲେ ତମର କିଙ୍ଗସ ହେଲା। ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ୱାର୍ଲଡ ର। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ। ୟୁରୋପ ର ଯୋଉ ଇଟ ଇଜ a very detailed history of England and this European land।
बट इंडिया रे जते बेले इमाने अर्ली मेडिएवल को स्टार्ट कले मार्क्सिस्ट राइटर स्टडी करिया पई से माने कोन कले ए यूरोप रो मॉडल टाको आनी कि इंडिया रे रखि देले से माने कहले जेमति यूरोप रे डिक्लाइन होची सेमिति इंडिया रे भी अर्बन डिक्लाइन होची जेमिति यूरोप रे एग्रीकल्चर सोसाइटी रे कन्वर्ट होची सेमिति इंडिया रे भी एग्रीकल्चर कन्वर्ट होची एग्रीकल्चर लैंड रे जेमिति सेठी भी अर्बन पॉपुलेशन डिक्लाइन करी रोमन वुमन सब डिक्लाइन हे जाउची सेमिति इंडिया रे भी गुप्त डिक्लाइन हे जाउची एठी भी लोक एगारियन हे जाउचंती अर्बन पॉपुलेशन छाडी कि रूरल पॉपुलेशन रे आसी जाउचंती सेठी जेमिति सामंत माने रहउचंती बेसी पावरफुल एठी भी फ्यूडल लॉर्ड्स माने पावरफुल हे गले जेमिति ए माने निज निजे को एम्पायर एम्परर कहले फाइट कले जो डिफरेंट रीजनल किंगडम गुड़ा एमर्ज करुची लाइक चालुक्य चोल पांड्य पल्लवस चांदेलस डिफरेंट डिफरेंट टाइम रे पूरा 6th सेंचुरी हिस्ट्री माने तमे पॉलिटिकल हिस्ट्री टिके पढिया को पड़िबो से जिनिस मॉडल को आनी देले बट रीजन एटा हला फेल्युअर रो फेडरलिज्म डिबेट रो एथिरे के विन माने समस्तकर निजर इंटरप्रिटेशन अछि बट लेटेस्टली जदी देखिबो इंडिया रे कंप्लीटली अर्बन डिक्लाइन हेनी कारण रीजनल स्टेट गुडा को जो थिले तांकर निजर सिटी थिला कैपिटल्स गुडा को थिला लाइक तांजावर होची बा फॉर एग्जांपल तमे ओडिसा रो भुवनेश्वर नियो एकामरा जो हे कि होची बा तमरो खजुराहो सेंटर होची सब सेंटर तांकर निज तांजावर जो कांचीपुरम फॉर एग्जांपल मीनाक्षी टेम्पल जो अच्छी सिटी तमे देखो सब पूरा ग्रैंड टेम्पल गुडा अच्छी वेल एस्टाब्लिश सिटीज अच्छी से सिटी से टेम्पल रे फिर टैंक अच्छी इरिगेशन होची तो सेटा कोठी हला अर्बन डिक्लाइन सेटा गोटे कांसेप्ट से कहउचंती अनदर चैलेंज से माने आनिले से कहले कि तमरो इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन करूची से कहले चोल मानकर जाभा सुमात्रा सहित बहुत ट्रेड थिला रोमन डिक्लाइन हला ता माने इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन करि जिवो ता माने नुह ए माने जाभा सुमात्रा ट्रेड करथिले ऑक्युपाई भी कले सिलोनिस सहित होतला बहुत जिनिस जाउतला तो सेटा गोटे चैलेंज आनिले but overall it was not at all big as it was in the time of Kushan and Satavahana माने जो रेट इंटरनेशनल ट्रेड होतला इटालियन और एम्फोरा वेयर तमे जो अरिका मेडुर ट्रेड पोर्ट गुडा को देखिबो एतिकी नथिला बट व्हाट एवर इट वाज देयर फिर कहले कॉइन रो पॉसिटी इज द मेन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन तापरे माने कहउचंती जो माने चैलेंज करूचंती फेडरलिज्म डिबेट को से माने कहउचंती कि कॉइन डिक्लाइन हला कोइ कि कहार इकोनॉमी डिक्लाइन हला कहि परिबोनी इकोनॉमी ता कॉइन ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करे नाही गोटे सोसाइटी कंप्लीटली बाटर सिस्टम रे चली परिबो हैला दैट वाज देयर थ्योरी द अदर थ्योरीज आर लाइक रीजनल स्टेट रो केते तांकर लैंग्वेज लिटरेचर जो पोएट ड्रामा केते कोन होची टेंपल एक्टिविटीज होची एग्रीकल्चर लैंड गुड़ा कन्वर्ट होची सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दे हैव गिवन सो कि एटा की पैरेलल हलानी वेस्टर्न रो फ्यूडलिज्म सहित हैला वेरी सिंपल लैंग्वेज रे एटा हम कहि दे परिबे आज्ञा मैम थैंक यू मैम yes and then this nature of samantwad ये जो फ्यूडल लॉर्ड रु किंग निजो को करिबा इट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन साउथ एशिया इंडिया रे कॉपर प्लेट ग्रांड देखी जो ब्रह्मदेव विलेज सिस्टम अछि ए सिस्टम तमे जदी बुझी परिबो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द यूरोप रे नाही ग्रांड एंड लैंड ग्रांड देबा निजो को सोशली अपर कास्ट को नेबा चेंज कर ए सब नाही तंगर ये रे तो तमे काई कि गोटे वर्ड टाको यूज करिवो यूरोप रो हिस्ट्री टाको एठी कहि कि सेटा गोटे चैलेंज फेडरलिज्म डिबेट इज अबाउट दैट एठी जो कास्ट रो हायरार्की जाउछि बा निजरो पावर को से माने अपर हाइट रे रखुचंती किंग रु सामंत सामंत रु किंग रु निजो को एम्परर कहि कि कोचंती लाइक पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन राज राजधिराज परम भट्टरक महाराजधिराज जेमती टाइटल गुडा को नोचंती एंड दैट these are the examples of such kind of activity जो किंग निजो को से माने जो फ्यूडल लॉर्ड्स गुडा को निजो को किंग कहि कि से एरिया रे होचंती एंड कॉपर प्लेट ग्रांट रो जो नेचर टा okay Odisha you know that Odisha's all political histories depend on the copper plate grant जेते ओडिसा रो तमे पूरा सोमवंशी गंगा जो हिस्ट्री गुडा को कंस्ट्रक्ट हेछि सब कॉपर प्लेट ग्रांट रे कंस्ट्रक्शन हेछि ओके and these are huge source of information anything else any other questions मैडम नाडु सिस्टम माने कोन it is southern India peninsular India रो early medieval system जो थिरे कि नाडु villages नाडु माने villages गुडा को तमिलनाडु region रे नाडु villages गुडा को established होची these are also agricultural villages okay
एग्रीकल्चर विलेजेस गुड़ाक स्मॉल सेगमेंट्स गुड़ाक होची जोटा कि जेमिति तमे एठी नॉर्दर्न इंडिया रे तमरो दुईटा सेगमेंट अछि अर्ली मेडिएवल रो गोटे पेनिनसुलर इंडिया आ गोटे नॉर्दर्न इंडिया जेतेले तमे नॉर्दर्न इंडिया पढिबो तमे हर्षवर्धन आ एमानक विषय रे पढिबो जो चांदेलस वगैरह जो नॉर्दर्न इंडिया फिर अग्निकुल वंश जो प्रतिहार गुड़ाक आसीबे पेनिनसुलर इंडिया पढ़िले तमे टिके साउदर्न इंडिया चोल चोल मानकर टिके पढ़िदब चोल मानकर जो एगारियन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो नाडु भी आहरी भलसे बुझी जब है ना नाडूज आर द विलेजेस द एग्रीकल्चर विलेजेस जोठी विलेज सेटलमेंट्स गुड़ाक हेला जो एमर्ज करूची सेठी नाडू 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 एक फिर डिस्ट्रिक्ट है कि से माने दे वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट ओके थैंक यू मैडम you have to read a तो lot मैडम you ये have to read a lot yes yeah तो मैडम ये फेडरलिज्म रो डिबेट चली मेनली मैक्सिमम हिस्टोरियन भी कहते कहीं से वेस्टर्न मॉडलटा एठी अप्लाई होची आ से समान तो माने कहीं से माने सेटा को पावर को आछुंदी पावर स्ट्रक्चर सेटा को नेकी डिबेट हो जदी yes actually this is the process of history writing okay काହାର किछि भूल नुह हिस्ट्री राइटिंग रो गोटे प्रोसेस तमे एबीसीडी न पढ़िथिले तमे सेंटेंस टे लिखि परिबनी सेंटेंस टा जदी लेखा हि नथिले तमे पॉइंट लिखि परिबनी सब जिनिस गोटे सिस्टम रे चलीछि तो एटा जो हिस्ट्री राइटिंग टा कॉलोनियल हिस्टोरियंस आसिले से माने किछिटा पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखिले तापरे मार्क्सिस्ट आसुचंती जो माने इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री लिखुचंती तापरे एबे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म चलीछि तो आहुर हिस्ट्री लेखा होछि तो हिस्ट्री राइटिंग टा सरी जाउनी एबे आगु बढ़िबो कथा होछि हाउ वी आर लुकिंग एट आवर पास्ट हिस्टोरियन एज द सब्जेक्ट मैटर जो माने लेखुचंती आर एस शर्मा जो लेखुचंती 60s रे बा रोमिला थापर जो लेखुचंती से माने से टाइम रो हिस्टोरियन तांको तांको टाइम रे देखियो पड़िबो जेमिति आमे आमो टाइम रे हिस्ट्री लिखिबा तापर 50 वर्ष पर जने आसीबो से हमकु क्रिटिसाइज करिवो सेमिति नुवा हैला आमे आमो टाइम रो अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे लिखिला तापर आउ जने आसीबो आमो मन को पड़िबो रोमिला थापर को भी पड़िबो विल्स जेम्स मिल को भी पड़िबो समस्त को पड़िबो तापर फिर गोटे नुवा इंटरप्रिटेशन रे देबो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जोटा कि आउरी आउरी आगु को जीवो आउरी चेंज हेबो there is no final thing there is no happy ending like movie or something like that आउरी चेंज हेबो आउरी सोर्सेस गुडा को आसीबो आउरी सोर्सेस आसीबो आउरी इंटरप्रिटेशंस आसीबो लोकंकर इंटरप्रिटेशन चेंज हेबो तो वेट just don't stick to one ideology just try to read everything ओके मैडम थैंक यू yeah so should I end the meeting we'll discuss the next class on the medieval politics the medieval Delhi Sultanate ro politics को सीधा पळे आसीबा ए सेट टा तमे पने पढी देथा ब्लॉक 2 टा जहां भी डाउट्स रहइबो I will try to and then Firoz I will answer that segmentary model in much clearer way कारण एटा pyramidal मो बेसी एक्चुअली डिटेल रे बटन स्टैंड को पढिनी but I will try to answer that okay एक्चुअली yes आउटे मैडम गोटे रिक्वेस्ट एक्चुअली आम टाइम तो कम अच्छे एग्जाम बहुत जल्दी हेबो बोधे तो इग्नो मेटेरियल भी ठीक अच्छी किसी भी आपन किसी नोट की पीडीएफ किसी एमती जदि भी हेई पारिबो बोले इट वुड बी गुड मैडम इट वुड वेरी हेल्पफुल इट्स फॉर अस जस्ट सुनो मु भी नोट जो करिछि इग्नो पीडीएफ या जहां भी हमें माने बहुत जिनिस पढ़ी भी तो तापरे आनु नोट रे आर्टिकल्स पढ़ी दउछु अंडरस्टैंडिंग आनी आसुछि डिस्कशन कर दउछु क्लास रे टीचर्स अदर टीचर्स सहित तो सब जिनिस तो नहीं बट मेक दिस तमरा तीन चारटा बही फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया रे आर एस शर्मा रो एंशिएंट पास्ट इयरली इंडिया रो रोमिला थापर उपिंदर सिंह रो जो एंशिएंट टू इयरली मेडिएवल इंडिया एंड देन इग्नो मटेरियल पूरा कंप्लीटली एटा तमरा मस्ट एसेंशियल बुक्स मेडिएवल रे सेमिति सतीश चंद्र जेल मेहता सतीश चंद्र गोटे फंडामेंटल बुक पाई फंडामेंटल पढ़ी दला तापरे डिटेल रे जिवो जेल मेहता सेमिति एंशिएंट इंडियन पास्ट आर एस शर्मा पढ़ी दला बा डीएन झा पढ़ी दला तापरे फिर डिटेल रे जिवो लाइक एली रोमिला थापर बा उपिंदर सिंह बा तमरा सेमिति फंडामेंटल रो स्टार्ट करिवो तो फंडामेंटल क्लियर रहले तमे फाउंडेशन गोटे क्रिएट तमरा लार्ज स्ट्रक्चर टे क्रिएट करि परिबो जदि एटा नाही ताले तमे जत्ते भी ऊपर पढुता तमे भूली जिवो तुमको लागिवो हिस्ट्री इज अबाउट डेट्स एंड किंग्स एंड क्वींस एंड तमे को बोर लागिवो जदि तमे फंडामेंटल पढिवो
ବହି ଲାଇକ୍ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆରି ଶର୍ମାର ବା ଏଲିମିଡିୟ ତମେ ଥରକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିୟଲାଇଜ that it's not about date and kings and all. This is about the concept, the concept of society, concept of culture, concept of debates, nationalist, historian, writer, colonialist, ki kemti kochi economic history ho, social history ho, cultural history ho, there are so many histories are there. So seta bhal lagibo tamko setebele. So choose good book. Okay. See you in next class then. मैडम को Yes. सतीश चंद्र तापर कोन मेहता कहले को मेहता जेएल मेहतार 3टा वॉल्यूम अछि मेडिएवल इंडिया रे सेटा तमरा नेट एग्जामिनेशन पे आप जदी नेट एग्जाम प्रिपेयर करूछ ताले पढो अदरवाइज इग्नू मटेरियल इज एनफ ओके हेलो यस मैम आई रिक्वेस्ट कि मैं एग्जाम केबे हबो कहि परबे कि ना सेटा मु कहि परिबेनी आई डोंट बिलोंग टू द इग्नू सेंटर सेटा बट मु पचारि दे के कहि दे परिबे नेक्स्ट क्लास रे ठीक अछि आपण आपण इग्नू सेंटर को कांटेक्ट करि पारंते यस जो रीजनल सेंटर अछि मैम एटा मोर फर्स्ट क्लास थिबो नेक्स्ट क्लास मु करिनी ब्लॉक 1 रे आपण पढै दिचंदी कि yes, it was about the state formation in India. जो first state formation होची सेटा कोटू होची तमे हरप्पा को कहबा बा वैदिक को कहबा बा मौर्यन रु नेबो इट इज अबाउट दैट जोंटा कि तमरो वैदिक रु स्टार्ट है कि हरप्पा रु स्टार्ट है कि तापरे मौर्य परे कुषाण तापरे सतवाहन सुंग भी आसीबे कान्वा डायनेस्टी अचंती एटा खाली से कहउचंती तमरो इग्नू मटेरियल भी लिखा है फर्स्ट लाइन रे कि आमे समस्त को आणुनु आमे किछिटा पर्सन देखुचे जो थेरे स्टेट फॉर्मेशन रो थ्योरी को स्टेट काहाकू कहबो गोटे वेल डेवलप्ड सिस्टम वेयर देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटर देयर विल बी सिटीजन सब्जेक्ट रहिबे टैक्सेशन सिस्टम रहिबो जो सप्तांग थ्योरी कोटेल देले इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट गोटे स्टेट केबे भी क्रिएट हेबोनी जदि गोटे थ्योरी नाही किंगशिप रो जदि गोटे आइडियोलॉजी नाही गोटे किंग नाही तो सेथिरे रिलीजन भी अछि सेथिरे टैक्सेशन सिस्टम अछि सेथिरे पेट्रोनाइजेशन अछि फोर्ट अछि आर्मी अछंती मिनिस्टर रहिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिबे तमर आज इंडिया गोटे स्टेट केमती कहबो गोटे प्राइम मिनिस्टर अछि गोटे प्रेसिडेंट अछंती रीजनल स्टेट रे चीफ मिनिस्टर अछंती गवर्नर अछंती हाउ मेनी मेकानिज्म इज देयर सो इट इज अबाउट दैट मेकानिज्म जो फर्स्ट ईयर सेकंड एक पूरा एक सिलेबस टा अबाउट दैट मेकानिज्म केमिति चेंज ही आसुची एंशिएंट इंडिया येली मेडिएवल इंडिया तापरे मॉडर्न रे तो आमे एंशिएंट डिस्कस करले फर्स्ट यूनिट रे जो थेरे किंग आ मोनार्चिकल सिस्टम एठी कोन होची एठी ना कर मोनार्किकल अछि ना कर मोनार्किकल माने खाली जदि किछिटा रूलर छाडी देबो जेमति पुलकेशिन सेकंड को छाडी देबो बा नंदी बर्मन बा नरसिंह बर्मन को छाडी देबो तापरे जो डायनेस्टी गुडा को जो रूलर गुडा को रहउचंदी से माने खाली ना को रूलर पावरफुल के रहला जो माने प्रोविंसेस रे रहिले सामंत माने जो रहले तांको पाखरे मेन पावर गुडा को रहला कारण से माने कलेक्शन करूचंती टैक्स कलेक्शन से माने रूल करूचंती ए माने धीरे धीरे पावर टा को शिफ्ट करूचंती तळ आडको माने डाइवर्ट होची पावर गुडा को डिसइंटीग्रेट होची तो दैट्स व्हाई इट अर्ली मेडिएवल इज अबाउट द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ओके so that's the thing मैम ये जो सामंत माने थिले ये माने कोन परमानेंटली थिले या फिर टेम्पररी थिले एमिति ऑब्जेक्टिवली केमति कहबो यू आर टॉकिंग अबाउट सेवरल स्टेट चालुक्य कहली पल्लवस कहबी चांदेलस कहली तांका अंडर रे केते सामंत थिबे वी डोंट हैव दैट रिकॉर्ड तापरे टेम्पररी और परमानेंट कथा पछले मु केमति कहबी एते ऑब्जेक्टिव ओके मैम यस मैम मु ये मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थिला सेटा क्लियरली बुझी पारलिनी तो नेक्स्ट क्लास रे इफ पॉसिबल टिके एक्सप्लेन करि परिबे कि तमे पढ़ी के आस्तबो तमे पर्टिकुलर क्वेश्चन पचारिबो ताहले मु कहि परिबी आओ यस मैम आई विल लाइक हां मार्क्स तमे एमिति करो तमे गोटे फ्यूडल डिबेट फ्यूडलिज्म डिबेट कहि कि गोटे आर्टिकल टे बाहरिबो read ओके मैम that one article try to read it feudalism debate उपरे जदि हरबंश मुखिया रो आसुची ताहेले हरबंश मुखिया रो पढिबो आरएस शर्मा रो 2001 रो जदि आर्टिकल आसुची सेटा भी पढि दे परिबो दैट इज आल्सो ए गुड आर्टिकल ता भितरे जहा तापरे जहा चेंज करिवार थिबो आई विल टेल यू बट इट इज क्वाइट अपडेटेड 2001 रो आरएस शर्मा रो feudalism बा हरबंश मुखिया रो जो feudalism debate रो जो इंट्रो पार्ट टा अछि that is one or otherwise तमर इग्नू मटेरियल मु कोची क्वाइट सफिशिएंट थरे पढि दियो थरे स्टार्ट करो रीड करिबा जो तीनटा यूनिट अछि ता भितरे यू विल अंडरस्टैंड दिस ओके मैम मैम लाइक हम लास्ट क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर ताकि हम ना बुझी पारुनी काव्यश्री टिके भल से कहबो जोर रे
मैम आपण जो लास्ट क्लास रे हमको किसी क्वेश्चन डाकी दियंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे देखिबा आज टाइम हलानी 6:12 हलानी नेक्स्ट क्लास रे देखिबा कोन क्वेश्चंस गुडा को अछि बट मु केमिति डाकिबे क्वेश्चंस केमिति डाकिबे आई डोंट नो माने केमिति क्वेश्चन आसीबो यू हैव टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर थिंग मोर काम हला तमरो जदी किछि प्रॉब्लम अछि ताकू बुझेबा प्लस यूनिट रे कोन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स गुडा को अछि सेटा क्वेश्चन केमिति भी आसी पारे तमरो अंडरस्टैंडिंग रहइबा कथा फॉर एग्जांपल फ्यूडलिज्म डिबेट जदि एली मेडिवल ऊपर आसीबो तमे केमिति भी आसु क्वेश्चन तमे पॉलिटिक्स ऊपर फ्यूडल एली मेडिवल पॉलिटिक्स लेखो कहबो बा एली मेडिवल इंडिया गोटे फ्यूडलिज्म थिला या नथिला बा जणे कहबो एली मेडिवल फ्यूडलिज्म रे कोन कोन डिबेट अछि तो क्वेश्चन तो वैरायटी अछि लेकिन आंसर तो गोटे अछि ना तो सब्जेक्ट गोटे ता ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आसी पारे मु तुमको सेटा मेन कंपोनेंट गुडा बुझे दोछि one can play with the questions but can't play with the answers okay you that is your duty to play with the answers yeah यस मैम you have to read it you have to read it there is no escape point of it तार शॉर्टकट किछि नाही तुमको पढिया को पढियो बुझिया को पढियो यस मैम तो मे भी पॉसिबल जहाँ भी क्वेश्चन आपनको नजर आसो मैम गोटे गोटे हमको कहीदेले आम से अनुसार टे रिड करू बहीटा मैम ओके टोटाली ठीक बहीटा अछि पढ़ा तो बहुत असंभव मैम तमे इग्नू मेटेरियल तो पढ़ी दे परिबो एटा 17 पेज रो गोटे मु तो घंटा करे पढिछि आज क्लास पूर्वरु तमरो हालांकि मु बहुत वर्ष पढौछि 3-4 वर्षरु बट you can see that the one is 17 page another is 12 page another is 13 page 17 12 13 पेज रो कोन तमे पढी परिबनी केते समय लागिवो गोटे ब्लॉक 3टा मैडम यूनिट अछि गोटे गोटे ब्लॉक तमरो 3टा यूनिट अछि 17 18 12 14 पेज रो गोटे गोटे यूनिट बहुत भलो से इग्नू मटेरियल तम सुविधा पई दिया हेछि सेति कि तमको पढिया को पडिबो I will not recommend it to go shortly or shortcut way this is against my ethics you can read it तम मानक पई ही से मटेरियल लिखाई छी एते कन्फाइंड और एते इजी वे रे एते इजी लैंग्वेज रे यदि सेति के भी न पढिबो फिर मु कोन करि परिबी सेथिरे त मु किछ कहि परिबी yes any other questions there are so many raised hand is there like Anand yes Anand हेलो मैम हेलो yes yes मैम ये जो पोस्ट गुप्त पीरियड ये पीरियडटा गुप्तर परवर्ती पीरियड ना गुप्तर पूर्ववर्ती पीरियड अरे पोस्ट गुप्त कहले तो गुप्त परटा हेबो ना ए देखो कुआडे गलानी पाठ तमे कुआडे पहुंचरुछ any other question go read any other question नो मैम पोस्ट कहले कोन पोस्ट माने जोटा पळेला गुप्त पोस्ट गुप्त कहले गुप्त परटा प्री कहले पूर्वटा रिंकी yes go रिंकी Rinki, any other? There are so many raised hand. Either it is it's your problem. आपण माने जो भूल रे दबे दी चंती. So I'm ending this meeting. If you have any question, you can unmute yourself and ask very quickly. No questions? Hello. Okay. Thank you. See you day after tomorrow. थैंक यू मैडम Okay. थैंक यू थैंक यू मैडम थैंक यू मैडम हाय मैम Have जोर पटी में. थैंक यू मैम Very soon. Thank you.